Assalamu alaikum. We are starting this class. Our class on this is our class on superposition of waves. Last time we were doing we did interference. Interference pattern. Actually, this was our topic. Interference. What is interference? Interference is the phenomena when two waves get into each other. And when two waves get into each other, they collide with each other. They sometimes support each other and sometimes they oppose each other. This is called interference. Interference is a pattern of maxima and minima. Interference is a sequence of maxima and minima. You have to copy this, give the heading interference pattern, and this is a pattern of it's a sequence of maxima and minima. Interference, this is an interference pattern. The waves are meeting back to back. It's a sequence of maxima and minima. What's the meaning of sequence of maxima, minima? When constructive interference occurs, it's a concept of maximum amplitude. And when destructive interference occurs, it means it is when destructive interference occurs, it means it's a minima. So this is our second concept for today. When two waves meet, they form node and antinode. Node means minima and antinode means maxima. You have to copy this. Now, maxima, constructive interference
antinode, destructive interference, node. So these are our two concepts. Look at this short animation. The waves are meeting like this, and some points they are supporting each other, and some points they are opposing each other. Some points they are supporting each other, and some points they are opposing each other. So this is a sequence of constructive and destructive interference. Now, interference in sound waves. Give a heading, interference in sound waves. Interference can occur in any type of waves. Give a new heading, interference in sound waves. Now, series of high and low sound signals. Acha, when interference in sound occurs, remember, interference produces high and low signal. High means loud signal, low means nearly no signal. Loud signal means antinode and no signal means node. So when interference occurs in sound waves, it will be a series of loud and no signal. You have to copy this. Interference in sound. It's a series of high and low sound signal, just like beats. The signal goes up and signal comes down. Acha, interference in light waves. Now you have to copy this. सर आपकी आवाज Sorry.
So now give the heading interference in light waves. You have to give a new heading now. This is the topic of interference. Now, when interference in light occurs, the maxima, which is actually antinode, means a bright fringe, sharp light, and node means dark fringe. So when interference in light occurs, look at the pattern. This is the pattern you will see on the screen. Bright and dark fringes. Bright and dark fringes, which shows, now this is a dark fringe. This is a dark fringe. This is bright. This is dark. This is bright. This is dark. Now you have to copy this. Yes. This is a combination of dark and bright fringes. When interference in light occurs, when interference in light occurs, it is a series of maxima and minima. Look at this. Now give a new heading, path difference and phase difference. अब ये नई heading डालें, दो लाइनें छोड़कर heading डालें path difference and phase difference, a very important topic in this article. Done. Now, we have to recall our important concept that 1 lambda corresponds to a phase difference of 2 pi radian. Always remember, देखो हमेशा याद रखो कि एक साइकिल का मतलब होता है 2 pi radian. अब ये तो है फेज डिफरेंस. पाथ डिफरेंस क्या चीज है? तुम्हारे पास यहाँ एक सोर्स है, एक लाइट है S1 पर, एक लाइट रखी हुई है S2 पर, ये एक पोजीशन है X, ठीक है. ये लाइट आती है यहां तक और डिस्टेंस ट्रेवल करती है 5 मीटर. यहां से एक लाइट आती है यहां तक और वो ट्रेवल करती है 7 मीटर. दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो होगा 7 माइनस 5 यानी 2 मीटर. जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो होगा 2 मीटर. तो पाथ डिफरेंस का मतलब है दोनों के दरमियान का डिस्टेंस. Now look at this. What is path difference? Two waves are coming from two sources. They meet at a common point P.
अब ये दोनों वेव कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगी। सो पाथ डिफरेंस क्या होता है, ये डिस्टेंसेस का डिफरेंस होता है। सो नाउ यू हैव टू कॉपी दिस। सर यहाँ पे वेव्स का कोहेरेंट होना जरूरी है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये सारा टॉपिक ही कोहेरेंस पर चल रहा है। कोहेरेंट होना इसलिए जरूरी है हमारे कोर्स में। वैसे तो जाहिर है कोई भी दो वेव्स आ जाएं, फिर उनका मीट करने का मतलब खत्म हो जाएगा। एक साउंड सिग्नल है, एक गैमा रेज है, ये मीट करें ना करें हमें क्या फर्क पड़े, पता ही नहीं चलेगा ना। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कमरे में बच्चे बात कर रहे हो, तो उनकी जो आवाजें हैं, साउंड्स हैं, वो एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं। तभी टीचर टीचर कहते हैं ना, चुप हो जाए, बात सुने। लेकिन अगर वहां पर आप कोई एसएमएस करते हैं, माइक्रोवेव जाती है, तो उसको साउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीट कर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये असल में रूल ये है कि ये तभी हमारे कोर्स में कोहेरेंट के साथ आएगा। वैसे तो दो वेव्स कोई भी मीट कर जाए। सो यू हैव टू कॉपी दिस डेफिनेशन। डन। गुड। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट बनाओ। पाथ डिफरेंस इज जनरली शोन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब ये एक हमारे कोर्स का कन्वेंशन है तो ये डिस्टेंस, लेकिन जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू से मतलब डिवाइड करके लिखेंगे। अब ये जो चीज है, पार्ट डिफरेंस इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू फेज डिफरेंस, ये भी कभी कभी होता है। एग्जामिनर कहता है कि पार्ट डिफरेंस को आप फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करें। दोनों चीजें अभी हम देखते हैं। आप फर्स्ट यू हैव टू कॉपी दीज 2 पॉइंट्स। डन। पार्ट डिफरेंस इज ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू फेज डिफरेंस। तो जब भी आप ये कन्वर्जन करेंगे, अब देखो इसकी एक एग्जांपल है। अब दो सिग्नल आ रहे हैं, S1 और S2। एक ने ट्रेवल करा है 6 मीटर एंड द सेकेंड हैज ट्रेवल 10 मीटर। आप दोनों को माइनस कर दें। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 4 मीटर। लेकिन जो यहाँ पर लैम्डा है वो है 2 मीटर। लैम्डा जो है वो 2 मीटर है, और लैम्डा अगर 2 मीटर है तो आप डिवाइड कर दे 4/2, इट्स इक्वल टू 2 मीटर। सो ये बन जाएगा 2 लैम्डा। तो हम क्या करते हैं कि फेज डिफरेंस को कन्वर्ट कर देते हैं, आई एम सॉरी, पार्ट डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा शो करते हैं। सो नाउ यू हैव टू कॉपी दिस एग्जांपल। एवरीवन हैज टू कॉपी दिस एग्जांपल।
Let me know, you people, once you have copied it, you can Done. answer. Yes, bolo. I mean done. Okay, good. So दोनों को आप दोनों सिग्नल्स को माइनस कर दो और जो डिस्टेंस आएगा, जो भी डिस्टेंस आएगा उसको डिवाइड कर दो लैम्डा से. Now 1 lambda is equal to 2 pi radian. 1 lambda is 2 pi. So 2 lambda का मतलब क्या होगा? देखो lambda का मतलब है 2 pi, तो lambda की जगह रख दो 2 pi. So जब lambda की जगह 2 pi रखोगे तो 2 into 2 pi is 4 pi. So अब जो फेज डिफरेंस हो जाएगा, फेज डिफरेंस होगा 4 pi radian. So you have to copy this simple conversion. This is how we convert. First, we find the path difference. First, we find the path difference. Then we convert the path difference into in terms of lambda. Acha, 1 lambda is equal to 2 pi radian. So that help us to convert it into 4 pi radian, which is the phase difference here. Done. अब देखें, दो तरीकों से पाथ डिफरेंस को शो कर सकते हैं. द पाथ डिफरेंस कैन बी शोन either in terms of pi, that will become the phase difference. It can also be shown in terms of lambda. This is a possibility. Now look at the second difference. अब एग्जाम्पल 2 क्या है कि दोनों वेव्स ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अब जो पाथ डिफरेंस होगा वो तो जीरो हो जाएगा. अगर इसने 2 मीटर ट्रेवल किया, इसने 2 मीटर ट्रेवल किया, तो पाथ डिफरेंस विल बी जीरो. इसमें फेज डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा. तीसरी एग्जांपल देखो, इसने ट्रेवल किया 7, इसने ट्रेवल किया 10. अब डिफरेंस आया 3. 3 तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, सो इट विल बी 3/2 lambda. So it is possible that the path difference is a regular integer, maybe a fraction, maybe zero. I repeat, path difference can be an integer, can be a non-integer, I mean fraction, and can be zero. Look at this. तरीका याद रहे, जब लैम्डा आ जाता है तो लैम्डा की जगह 2 पाई रख दें तो वो फेज डिफरेंस बन जाता है. नाउ there are three options for path difference: integral multiple, zero, and non-integral multiple. Now you have to copy this screen.
There are three options for path difference. You have to remember. Path difference can be an integral multiple of lambda. It can be 0 and it can be non-integral multiple of lambda. अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. हमारे कोर्स में अगर ये 0 है तो फिर इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. अगर पार्ट डिफरेंस होल नंबर में आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. और अगर पार्ट डिफरेंस फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर उसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. You have to update the same sheet. Now, we make a summary table now. Look, when it is PD is equal to n lambda, PD is equal to n lambda, and lambda का मतलब होता है whole number. When PD is equal to n lambda, n can be 0, 1, 2, 3, then phase difference will be 2 pi, lambda is 2 pi radian. So phase difference can be 0, 2 pi, 6 pi. अब ये जो फॉर्मूला है n lambda, इसका मतलब होता है होल नंबर. ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब है होल नंबर होगा. हम इसको यहां भी मेंशन कर सकते हैं और वी कैन मेमोराइज इट हियर कि देखो पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा है और फेज डिफरेंस 0. ये सारे इवन नंबर है. ये वाले नीचे जो लिखे हुए दे ऑल आर इवन नंबर्स. तो जब ऐसा होगा फेज डिफरेंस में तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. नाउ यू हैव टू कॉपी दिस. Done. गुड. Now, compared to constructive interference, now we have to build a list of conditions. Now, this is a very important thing to remember कि देखो जो इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं वो अलग हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस अलग हैं. ये दोनों अलग अलग ट्रीट होती हैं. कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव्स मीट इन फेज, वेव पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा. अब आपको यू हैव टू कॉपी दीज कंडीशंस. ये ख्याल रखना है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं. इंटरफेरेंस की कंडीशंस अलग हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अलग हैं. यू हैव टू कॉपी दिस.
These are the four conditions for constructive interference. सर ये लास्ट पॉइंट समझाते सर। लास्ट पॉइंट का मतलब ये है कि जो एम्पलीट्यूड, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तो जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा, यही तो उसकी पहचान होती है। दो सिग्नल मीट कर गए और उनकी आवाज या ब्राइटनेस बढ़ गई। तो दिस इज द वे। आजकल ये जो 3D प्रोजेक्टर्स होते हैं, वो दो दो प्रोजेक्टर मिलकर एक फिल्म को चला रहे होते हैं। सो एक्चुअली ये मर्जर है। 2A का मतलब है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अब आ जाओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका फॉर्मूला हमेशा होता है वैसे n-12 लैम्डा। एक मर्तबा प्लस हाफ भी आ गया था, बट वो एक रेयर केस है। अब इसमें n की वैल्यू में जीरो नहीं होता, वरना वो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। 1 से शुरू होता है। अब यहां तुम देख सकते हो कि दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर। तो दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर, सो फ्रॉम दिस यू कैन सी ऑड नंबर ऐसे चलेंगे। नाउ यू हैव टू कॉपी दिस। इसमें जो फेज डिफरेंस है वो ऑड नंबर है। So when destructive interference occurs, the path difference is n-12 lambda. Done. Good. अब देखो, जिस तरह डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस है ना, जिस तरह कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस हैं, उसी तरह यू हैव टू सी द कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहली कंडीशन ये होती है कि वेव्स शुड मीट आउट ऑफ फेज। पाथ डिफरेंस नॉन इंटीजर होगा, फेज डिफरेंस ऑड नंबर होगा। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो सिग्नल या तो जीरो हो जाता है या सिग्नल वीक हो जाता है। यू हैव टू कॉपी दिस।
Done. Good. So there are separate conditions for constructive and destructive interference. जब हम इनको ड्रॉ करते हैं तो देखो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पर ब्राइटनेस बढ़ती है। अब जो इंटरफेरेंसेस हैं वो पहले इन्होंने वाटर में करवाई। इन्होंने क्या किया कि रिपल टैंक लिया और उसमें दो डिपर लगाए, और रिपल टैंक में क्या होता है कि उसका इमेज नीचे बनता है। जब दो सोर्स लगाएंगे, दो डिपर होंगे तो उनको कोहेरेंट होना चाहिए, तो नीचे इस तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे। इसमें आपको नजर आ रहा है कि सम पोर्शंस आर डार्क एंड सम पोर्शंस आर ब्राइट। ये जो रिपल टैंक होता है इसके नीचे एक प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है, उस पे प्रोजेक्टर की तरह इमेज आता है। लुक, दिस इज द केस। इंटरफेरेंस इन वाटर विद टू स्लिट्स। फिर इनको ख्याल आया कि हम चूंकि दो सोर्सेज में इंटरफेरेंस कराना मुश्किल होता है, तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि सोर्सेस एक कर दें, आगे स्लिट डबल कर दें। उससे फायदा ये होगा कि सोर्स अगर दो हों, दो ट्यूबलाइट्स हों, दो लैंप्स हों, दो वाटर सोर्सेज हों, तो उसमें इंटरफेरेंस कराना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने कहा सोर्स एक कर लें। देखो, लुक एट दिस, टू वन सोर्स, आगे डबल स्लिट लगा दें, वो खुद ही ब्रेक होके दो वेव्स बन जाती हैं। सो अब ये वाली हेडिंग डालो, interference in water waves using two slits. Give this heading. This is the primary concept. Getting coherence in two separate sources is practically very difficult. So उसमें coherence नहीं होती, जब coherence ना हो तो interference नहीं होती. You have to copy this concept. Done.
Done, sir. अगर एक सोर्स हो और उसमें डबल स्लिट हो तो कोहेरेंस पॉसिबल होती है। अब जैसे आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पर आखिरी कॉन्सेप्ट है, पीछे सोर्स एक है लेकिन आगे डबल स्लिट है। इससे क्या फायदा होगा कि जब ये डबल स्लिट से गुजरेगा तो ये सिंगल सोर्स ब्रेक होके दो बन जाएगा। इसलिए जहां पर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो इससे आपका जो रिजल्ट है वो बहुत एक्यूरेट आएगा, क्योंकि कोहेरेंस का मसला नहीं होगा। सोर्स असल में एक है। जरा इसको देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ताकि हम क्लास एंड की तरफ आए। If the top of one wave meets the bottom of another wave, लुक एट they दिस। cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines. Where they cancel, different happens. दिस इज अ If the डबल top स्लिट। of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines. Where they cancel. Now this is the last concept for today. You have to copy this. So we keep it up to here, and we will inshallah continue this in our next class. I will put a class tomorrow also. Now it's getting over, and we have to do some work more. A little work is remaining, but I have to do it properly because this is an important chapter. So we will inshallah continue in our next class. Inshallah tomorrow. Allah Hafiz. Allah Hafiz.